अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ द आइसोलेशन सेंट्रल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फॉर द लास्ट 27-28 डेज़ वी हैव बीन डूइंग दिस डेली शो। अब इट्स नॉट सो डेली, इट्स ऑन अल्टरनेट डेज़, बट इनिशियली इट स्टार्टेड ऑफ एज अ डेली शो। और द पॉइंट वाज कि कोरोना के डिफरेंट जो हमारे इस टाइम पेंडेमिक चल रहा है और हम सारे क्वारंटाइन लाइफ के अंदर हैं, सो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस डिफरेंट चैलेंजेस जो हमारे दरमियान आए हैं। हमने मेंटल हेल्थ पे बात की, हमने आपके जो है वो फिज़िकल हेल्थ पे बात की एंड स्टफ लाइक दैट। सो आज जो टॉपिक चूज़ किया है, दिस इज़ समथिंग जो शुरू से ही लोगों को थोड़ा, जो स्पेशली हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के, उनको डर था कि ये हो सकता है, एंड दैट वाज के इंक्रीजिंग डोमेस्टिक वायलेंस एंड डोमेस्टिक अब्यूज़, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर फोर्स टू स्टे एट होम फॉर वन रीज़न और दी अदर। सो इसकी वजह से जहाँ पे जिन घरों में या जिन जगहों पे पहले इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा था, वहाँ पे इसमें इंक्रीज़ होने का ख़दशा ज़ाहिर किया गया था। बट क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा और क्या हो रहा है, किस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं और हम लोग इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? सो फॉर दैट आई हैव इनवाइटेड a good friend of mine, Naima. Naima is a lawyer by profession. She has several years of experience. इसके अलावा she is working as a legal consultant for an NGO, and she has been writing different columns in different newspaper for some time. So first of all, welcome to the show, Naima. Thank you, Hammad, for having me. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपकी क्वारंटाइन लाइफ कैसी जा रही है? Quarantine and I'll lump it with working from home life is शुरू में थोड़ा मुश्किल था, but alhamdulillah it's going well now. I mean, I'm getting used to the routine and doing things at my pace. So whilst I'm looking at the silver lining as well, that I'm doing things at my pace and there's flexibility, but I'm also looking forward to getting back to the normal life routine. But I don't know what normal will be anymore, right? None of us Yeah, know yeah. what will be the new normal. So yeah, it's going so far so good So what are you working on with working nowadays? from home. Anything So particular? nowadays I'm working. I'm doing my remote project consultancy. It's a human rights project that I've been consulting for the last year and a half, and it allows me remote work. I work with South Asian teams globally, so it allows me to just work on project reports, do some research, and indulge in advisory work. So it's slow, but it's still something to keep my mind occupied, and Hmm. hence keeps me a little busy. ओके, सो कमिंग टू आवर मेन टॉपिक टुडे, हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक अब्यूज़ की। सो जनरली आप, सिंस यू आर इन द प्रोफेशन और आप फॉलो करते हो, आप रिसर्च में भी हो, सो व्हाट हैज़ बीन द ट्रेंड ओवरऑल? क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? बिकॉज देयर वाज एन एजम्पशन एंड बेसिकली फेयर के लोगों को इसके थ्रू इससे गुजरना पड़ेगा। जिन लोग पहले एक डोमेस्टिक हाउस होल्ड में रह रहे हैं, दे वुड सफ़र। सो व्हाट हैज़ बीन द ग्राउंड सिचुएशन सो फार? Hamad, I'm glad that we're talking about this topic, and rightly so, because actually one of my colleagues asked me to research. Globally, we were collecting information what's happening in the South Asian region, खास तौर पे subcontinent में. So I just happened to stumble upon this New York Times article, which was mainly Eurocentric, but that was on, okay, what is the subcontinent doing and what is Bangladesh and Pakistan is doing in terms of domestic abuse. So, I mean, mental health professionals are pointing a sudden surge in domestic abuse and domestic violence under this pandemic. They're using a very unique term, which is called intimate terrorism. And this hasn't been used ever before. I mean, and it's a very pandemic related term that's being used for this absurd rise in domestic abuse. So world over, globally, coming back to where my research led me to, basically, globally we saw that in Italy and Spain, suddenly people, the helplines, abuse cases, and all were ringing, and everything was mental health professionals, therapists were scrambling and to reach victims of abuse, and mostly vulnerable women and children, I have to say, because nobody was used to this, right?
And when I came, so there was a pattern there, right? So I was now analyzing if the pattern has actually reached the subcontinent, Hmm. because we just went into the lockdown, and this is the report, New York Times report of like end March, and Right. now we're in early May. So my update right now with Pakistan at the moment is, where my research ended was that HRCP had tweeted, and Ministry of Human Rights, which are the two pivotal human rights organizations in Pakistan that deal with human rights cases, and especially cases of abuse. Over here, we are still counting the numbers, and they're gradually increasing day by day. And while we can't quantify it, there are still the Ministry of Human Rights tweeted free helpline 1099, and a WhatsApp number. I can state out the number as well. It's 033390857009, where any victim of domestic violence or abuse can reach them. Then, I mean, we can start discussing the other forums as well, but this is how globally the pandemic is affecting the domestic abuse and domestic violence. अच्छा, उससे पहले मुझे आप ये बताओ कि डोमेस्टिक अब्यूज़ को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? डोमेस्टिक हाउस होल्ड क्या होता है? व्हाट्स द डेफिनेशन? हाउ डू वी से कि अच्छा ये वाला जो हाउस होल्ड, फॉर एग्जांपल ये जो घर है यहाँ पे डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है? Hmm. So basically, it'll just encompass two broad categories, which would be like a psychological harm, which is like where putting somebody into the line of fear that, I'm going to hurt you. It's mainly psychological or emotional damage. And the second is obvious, it's physical, right? Battery or assault, where it leads to where actually becomes a proper assault, like attack on your person, your body. So domestic violence or domestic abuse inside a household by your intimate partner becomes a case of domestic violence, yeah. Or any abuse done by the a family member, yeah. It becomes a case of domestic violence. ओके, सो अभी पाकिस्तान में आप बता रहे हो कि जो है 1099 इज़ वन हेल्पलाइन, और दूसरा आपने व्हाट्सएप Yeah. नंबर बताया है जो कि हम मैं आपसे बाद में पूछ के आई विल एड इट टू द पोस्ट डिटेल सो पीपल कैन सी इट. बट व्हाट हैपन्स व्हेन अ पर्सन रिपोर्ट्स देयर? क्योंकि पाकिस्तान में एक ज़्यादा बड़ा मसला जो हमें आता है वो आता है फॉलो अप का, कि हमने कंप्लेंट कर Yeah. दी, हमने केस कर दिया, हमने सू कर दिया अगले बंदे को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? So what has been the, I don't want to say success rate, but what's the progress so far? So that's a really good question, Hammad, and it's quite a struggle, not just as a lawyer, but even as any common citizen seeking justice, right, in our country. And just to shift the gears and come back a little behind before I answer your question. UN has urged all the governments, especially in the pandemic lockdown, that governments all over the world should put women's safety first. मतलब actually UN ने दे दिया ये order कि Hmm. Hmm. देखिए domestic abuse के cases are on the rise. You have to put the women's safety first, because हमें पता है कि cases are on the rise, right? So Pakistan में खास तौर पे, and I want to lump in other subcontinental countries as well, because we all suffer from a colonial hangover. But coming to Pakistan, we have all laws, right? We have all sorts of laws. But the lack of implementation and lack of sensitization of frontline officials, especially the police workers, lumped with the government officials, is so poor that, for example, हमारे पास domestic violence prevention act है, Hmm. जो हर बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब 2016 में सबने पास कर दिया हुआ है, सबकी ने पास कर दिया हुआ है, लॉ बन गया हुआ है. बट nobody uses it, like we don't know about it, right? Because उसकी implementation ही Hmm. इतनी पुअर है. And why you may ask, patriarchal notions है, issues of privacy है, again follow up और referral नहीं होता. So basically now coming back to कि what happens, referral mechanism इतना पुअर है कि लॉ तक तो बात जाती नहीं है, उससे पहले ही रुक जाती है on the sensitization and capacity of let's just say police constable, कि अगर औरत या एक vulnerable इंसान जाता है और से कि मेरे ऊपर ये तशद्दुद हुआ है, तो उनको समझ नहीं आएगी. मतलब वो कहेंगे कि हाँ जी, घर का मामला है लॉ मियाँ भी. होगा, बट
मतलब वो ये भी कहते हैं ना कई के घर Exactly, का because मामला है, घर पे इज्जत रखें और ये और वो. exactly. So domestic violence and domestic abuse is such a complicated issue that makes it even more complicated and nuanced in a negative way because nobody wants to because हर कोई कहता है कि हमारा तमाशा लग जाएगा या प्राइवेसी हमारी बिल्कुल हर्ट हो Hmm. जाएगी and it cuts across all classes and sections in our society. True. So ये बहुत बड़ा मसला है. क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहूंगी अगर मैं कहूँ कि दिस दिस और दैट हैज हैपेंड टू मी, राइट? एंड सो आई गेस we we have the laws but we don't have the right kind of infrastructure, I would say, in place to support such victims of abuse. And अच्छा. that cross cuts rape victims, honor killing, child sexual abuse, domestic violence, so any marginalized vulnerable community. Yeah. हम्म. लेकिन यहाँ पे देखो अब दो बातें आती हैं ना. एक तो ये है कि जो हमारे विक्टम्स होते हैं वो कई दफ़ा, आप चाइल्ड अब्यूज़ की बात कर लो, आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करो, दे डोंट कम फॉरवर्ड बिकॉज इट कैन बी अ फैमिली मेम्बर. ठीक है, इन लॉट ऑफ केसेस दैट्स आई थिंक द मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है. सो घर की इज़्ज़त, ख़ानदान की इज़्ज़त और ऑल ऑफ दैट कम्स इन टू प्ले. एक तो हमने ये अज्यूम किया है कि वो हेजिडेंट होते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट वेयर सिस्टम फेल्स देम. लेट्स से एक बंदे ने हिम्मत कर ली है, वो थाने पहुंच गया है, उसने वहां जाके Mm. एफआईआर रजिस्टर करानी है. अब इस पे ठीक है, एक आपकी बचना आपने बात की कि वहाँ पे उस कांस्टेबल, एसएचओ, इंस्पेक्टर जो भी है उसका एक अपना बायस आएगा, बट उसके अलावा व्हाट आर द स्ट्रक्चरल फ्लॉज जो हमें नज़र आते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम बेहतर होना चाहिए या एनी दैट काइंड ऑफ थिंग इफ़ समवन रियली So वांट्स टू रिपोर्ट? basically, yeah. So basically एक तो referral mechanism streamline हो. So see, referral mechanism needs to be streamlined with the investigation mechanism. And then it needs to structurally it needs to be streamlined, right? Because अगर आपका जो ऑफिसर है वो किसी और पेज पे होगा एंड आपका जो दूसरा हाई अप ऑफिशियल है वो किसी और पेज पे होगा एंड लेट्स जस्ट से मैंने इसको रिफर करना है टू अ शेल्टर होम, दे आर नॉट रेडी टू अकोमोडेट. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के अदारे होते हैं, शेल्टर होम्स होते हैं, where they can take refuge or seek refuge for the day or the night. So if they are not they don't have the capacity to take them in, so that is a big hurdle as well. So structurally ये भी flaw आ जाता है that all of them need to work in tandem with each other, right? But break पहले ही आके structurally भी तब लग जाती है कि sensitization and capacity building is also a structural and institutional flaw. राइट. Because if anybody comes for any reporting, it just takes eons and eons and it just never goes through. So, Abhi, the government is doing like they have helplines. So, we also have Punjab Commission on Status of Women, but that's very Punjab specific. And even though I worked for them, so I know, but then again, it's a very administrative glitches aati hai, just like in any government adara. So whilst they do have people sitting in the call centers, but I think the level of information and prompts are very few. And I have to merge the cases of domestic, कुछ cases of domestic violence उधर ही खत्म हो जाएंगे अगर उनको एक therapist मिल जाए, mental health professionals आंसर कर दें, बिकॉज हर केस लीगल केस नहीं होता. इट डजंट हैव टू हैव अ लीगल फेस टू इट. So फैमिली थेरेपिस्ट but कैन हेल्प even यू. yeah, family therapists can help, but even mental health professionals are inundated with work. They're scrambling, with the risk and rise in cases and world over. So किसी ने भी नहीं देखा था. I mean हमारी तो वैसे Pakistan especially, with the resources are limited, it's under resourced. So I think, I mean, it's this pandemic खास तौर पे is testing the resilience of healthcare and other institutional structures and frameworks of countries world over. So as try its best, but I don't think we are there yet. But it's domestic violence is also a mental health crisis, I would say.
because if we can cater it with therapists reaching out to them, that will also be. But government does not think of that. Like they've never in their policy put ki counselors hone chahiye, right? And sometimes lawyers act as counselors, frankly. You'll be a lawyer slash mediator. So if you go to a custody case, a divorce case hoga, essentially you're playing the role of a mediator. So mediator essentially sometimes, a therapist, I mean, I don't want to oversimplify it, but it could just, the domestic violence cases can help from this, get help from this as well. अच्छा, going back to the process, if in an ideal world what is generally the process कि let's say कि हमें structural issues हमने निकाल दिए हैं, someone reported her or his case to police for example, so what exactly are they Yeah. supposed to do by the law? Yeah, so like this Ministry of Human Rights ने ट्वीट निकाली थी कि हमें 1099 पे कॉल करें, and that applies across Pakistan because it's a federal Yeah. hotline and a free helpline number. They will listen to your complaints, they will give you that legal recourse and advice, and then they will also link you with the agency, which would be most probably will be police. Right. But in this pandemic it will be even more so difficult because social distancing aa jayegi and all. But in an ideal situation they will prompt the police to go to your house and see what the matter is, and yeah, this is how it will flow. और जनरली हमारा जो ये सिस्टम जो आइडियली हमने मैप डाउन किया हुआ है दैट दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू गो रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट कि होता है या नहीं होता, इज़ इट सिमिलर टू व्हाट इज़ हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, या उनके हमसे कोई डिफरेंट हैं? आई एम श्योर दे आर बेटर इन इम्प्लीमेंटेशन, बट स्ट्रक्चरली सिस्टमेटिक जो हैं हमारे प्रोसेसेस आर सेम. Yeah, so structurally it's the same. Like, I was reading a story of a woman in Italy, and she and her child, a young adolescent child, are victims of domestic abuse. And after 5 weeks in lockdown, she suffered a couple of bruises, and she called on the helpline. And all they could say is that, bear through the lockdown. But even the governments are not prepared because we need to make a makeshift shelter, quarantine shelter for them. Yeah. So this is how they're structurally dispositioned there as well. Yeah. ठीक. अच्छा, अब हम अगर इस पेंडेमिक से बाहर आते हैं, सो जनरली जो डोमेस्टिक अब्यूज़ के पाकिस्तान में सिचुएशन है उसमें किस तरह के केसेस आपके सामने आए, रिसर्च के अंदर, स्टडीज़ में या पर्सनल एक्सपीरियंस में किस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं? व्हाट आर सम ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स, द बिगेस्ट फैक्टर्स कह लो आप? In cases of domestic abuse, you mean? Yeah. Well, like violence या तशद्दुद by any family member towards another family member would be intimate violence, right? Like would be intimate terrorism, like they said. So I mainly around 70 to 80% women, at least this year, last year 2019 ki report thi, have been victims of this. Okay. And this is an approximate number. I'm sure it's even more than that. The types of cases are certainly on the top of the list. It's rape. The numbers 2-1 followed up is honor killing. And the third one is beating up your wife or child, just physical, intimate partner violence, right? It's between two husband and a wife. Yeah. I guess these three are the main sad, unfortunate, I would say, part of domestic violence. And I have to say that this is majority where women suffer the most. Yeah. एंड व्हाट डू यू थिंक, अभी तक जो हमने स्टेप्स लिए हैं, देयर इज़ द ह्यूमन राइट्स कमीशन, देयर आर लॉज, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, शेल्टर होम्स बनने वगैरह वगैरह, बट ऑनेस्टली वेयर डू वी स्टैंड टुडे? 5 साल पहले की बात कर लेते, फॉर एग्जांपल 5 साल की निस्बत इज़ इट ऑन राइज? इज़ इट ऑन राइज तो क्या हम लोग उसको केटर भी कर रहे हैं,
या हमारी एफर्ट्स अभी भी नॉट अप टू द मार्क? If I so of course I work with one of the vulnerable groups as well. Like I work with transgenders. I'm also currently working on child rights as well, but also women rights as well. As I'm previously on women-centric laws as well, pro-women laws. Whilst again, I have to reiterate, whilst we do have laws, it like if we pick up case studies of Norway, Sweden, countries who have really sort of have reached that gender equality or have are in the top 5 list in the gender parity index जो हर साल आता है. There are two basic things that they do. Hmm. एक तो political will बहुत होती है, you know, Right. ये सबसे बड़ी चीज होती है, like and number two, उनके policy जो tool होता है ना, that always focuses on inclusiveness. Even though World Bank की report जो last year भी अभी आई है, it focuses on this major policy tool which is inclusivity. उसका Right. मतलब ही यही है कि अगर आप decision making positions पे औरतों को ले आएंगे, तो फिर you know they will they will not be this perpetual disparity where men will always outweigh women in every sphere of life, and their decision making power will always be hampered. So I guess so political will and gender equality, inclusive gender equality को बहुत important समझा जाता है. So laws तो बाद में आते हैं, right? Hmm. So by Hmm. these two things, अगर आप ये पहली दो चीजें कर लें, आपका mindset जो है, so in short मैंने ये notice किया, like whenever I go and give trainings as well now, मेरा project में एक embedded मैं अब डलवा रही हूँ कि आप capacity building करें अपने frontline officers की, train करें उन्हें, because no matter how many laws you have, laws will only be effective so far as they walk in tandem with the mindset change, the sensitization जिसको हम कहते हैं. So True. sensitization campaign is a perpetual thing जो society में overnight नहीं आ जाती. Hmm. So in the last 5 years, it's been at a snail's pace. Whilst there have been many major developments, of course, itni amendments passed हुई हैं. There have been good positive stories as well. But I guess this gender sensitization is always taken very lightly. Hmm. It should be part of everything, wherever we sit in the government, at the lower ranks, at the higher ranks, at every rank. So अगर हम ये कर ले, so I feel this will really increase. This will be basically a really good policy gap that will be fulfilled, and it will make everybody's life really Hmm. easier. तो आप लोग जब ट्रेनिंग करते हो, क्योंकि स्पेशली विद द गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि दे आर मोस्टली इन द पावर पोजीशन के जहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं राइटली एंड एवरीथिंग. सो एक तो होते हैं जब वो ट्रेनिंग में आ रहे हैं, सो दे हैव सम सम काइंड ऑफ प्रेजुडिस या जो भी आप कह लो. बट व्हाट इज़ द जर्नल डिफरेंस डू यू सी कि ट्रेनिंग के एंड पे जर्नली आता है, या इट शुड बी समथिंग वेरी कंसिस्टेंटली डन विद देम, क्योंकि वन ऑफ ट्रेनिंग आई डोंट थिंक वुड चेंज द माइंडसेट. सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस विद दैट पर्टिकुलर माइंडसेट एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग? व्हाट डू यू सी कि अच्छा तो फ़र्क Yeah. पड़ा? Huh. So like you mentioned, one of the training hoti nahi hai, right? You या. only do that like after a couple of, let's just say, four series of training. राइट. So pre assessment hoti hai, and then post assessment hoti hai, right? And then you या. go to their places and observe ki whether it has actually taken place or not, and then you actually go and ask them कि आपको जी फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, so that only happens after a couple of trainings, and that also they have to be in perpetuity, one off तो हो नहीं सकती, just like anything in life, right? There has to be continuous development, continuous training programs होने चाहिए जो कि नहीं है, and they have to be gender sensitive. For example, police officers, lower ranking जो frontline officer है, constable, उसको समझाया नहीं जाता कि हरासमेंट क्या होती है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होती है, औरतों से किस तरह आपने ट्रीट करना है, जेंडर ऑफ ऑल सॉर्ट्स, बेसिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को किस तरह आपने ट्रीट करना है. So these are the pivotal things that are still lacking, and unfortunately we're still talking about it. So we really need to mobilize the resources right where we right where it is needed. आई थिंक जिस हम जनरली भी बात कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में प्रॉब्ली सबसे बड़ा मुश्किल काम एफआईआर लिखवाना है.
व्हेन इट्स योर ब्लडी राइट के इफ़ यू यू नो कोई आपके साथ ज्यादती हुई है या आपके साथ कोई जुल्म हुआ है या आपको कोई शिकायत है, तो आप जाके एटलीस्ट रिपोर्ट तो करवा सकते हैं, राइट? दैट्स योर आई डोंट नो द फर्स्ट राइट यू हैव, बट जनरली सबसे बड़ा Hmm. मसला हमारा एफआईआर का ही बना होता है. सो आई एग्री विद यू कि इसी तरह हम जब बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम्स में भी, सो 1111 के हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं या जो हमारे वो सिपाही होते हैं सबसे पहले उस जगह पहुंचते हैं, उनको मेंटल हेल्थ और थेरेपी की ज़रूरत साथ साथ पड़ती रहनी चाहिए ताकि वो भी दे शुड बी इन चेक विद देम सेल्व एज वेल. सिमिलरली सेंसिटाइजेशन में भी यही बात आती है कि जब हम लोगों के जो पहले रिस्पॉन्डर हैं, जब आप फर्स्टली एक थाने में एक जगह पे एंटर होके कंप्लेंट करने, अगर वहीं पे आपके साथ कोई नहीं सुनेगा तो बात तक तो बाद की बात है, सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी तो वहाँ पे देखेंगे ना. सो आई एग्री. बल्कि इंटरेस्टिंगली आज हम इस पे बात कर भी रहे हैं. सो खतीजा सिद्दीकी के केस को भी आज कितने साल पूरे हुए हैं, शी रोट अ पोस्ट अबाउट इट एज वेल. सो वो एक हाई प्रोफाइल केस था जिसमें इनिशियली शी हैड टू सफ़र. हालांकि डे लाइट में एक इंसिडेंट हुआ था, बट शी हैड टू सफ़र एंड शी हैड टू मेक प्ली टू एवरी वन, एंड Hmm. अनटिल मीडिया ने उस चीज़ को उठाया फिर उस केस का जो है वो पेस तेज़ हुआ. सो आई एग्री कि जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, जो हमारी फर्स्ट विंडो होती है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, दे नीड टू बी ट्रेंड. सो या एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड on this topic, anything we Yeah, have so I missed? mean, I think, yeah, so you were mentioning that, I think at the end of our discussion, I should highlight the numbers, Sure. it might help people who will be listening, बिल्कुल. our viewers. So there's a Punjab Commission on Status of Women helpline. It's 1043, where you can lodge a complaint on anything, related to women's violence. And then, as I mentioned, Ministry of Human Rights ki hai helpline 1099, Right. and you can text or WhatsApp also them. The last time I checked, this was ten days ago. So the number is 0333 9085 709. Right. Or generally, what's ये they immediately take your call and then they get back to you. What's the No, journey? so they will, of course, they will Okay. refer you the options, what can be done, what is your current, positioning, and they will give you the advice also, like a Right. preliminary advice there and then. अच्छा, एक और यहाँ पे अब बात बताओ, क्योंकि बाहर भी हम लोग देखते हैं, आई थिंक पाकिस्तान में आई वुड ऑल्सो पर्सनली लाइक टू नो, जो हमारे पास जो लोग वकील नहीं कर सकते फॉर इंस्टेंस, या जिनके पास लीगल हेल्प नहीं होती, सो क्या ये लोग उधर भी रेफ़र करते हैं और क्या गवर्नमेंट फरहम करती है लीगल हेल्प? Yeah, so this is a really interesting question. So actually, the international NGO I consult for is something that provides pro bono legal aid as well. So they can also sign up with us. It could be either an individual or an organization looking for, and then we can connect them to people or lawyers who are willing to do pro bono राइट. work as well. राइट. ये भी एक area है, and then of course NGOs bhi hain, that do a lot of work. But yeah, I mean, they can contact me. I can link them up to people and streamline things, because I know contact based develop karna, it takes a lot of time, and quick referral mechanisms nahi hote. So yeah. Right. Sounds good. I think that's pretty much about it. It's a very, I would say, sad topic, but it's a harsh reality, and it's about time that we start doing something about it. Because I totally agree with you on the point कि पाकिस्तान में हर चीज़ पे लॉ एग्जिस्ट करता है. ये हम लोगों की कई दफ़ा हम लोग इसको ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जी हमारी तो कानून हेल्प नहीं कर सकता. कानून मौजूद होते हैं, उनको अमल दरामद नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती. But if you take up the fight, there are chances that you are going to make it. But once again, thank you for joining us. Thank you for having me, Hammad. थैंक यू. ओके, एंड बाकी जो है बाकी सबको It वही was good. मैसेज है, आप सबको भी वही मैसेज है, स्टे सेफ, स्टे एट होम इफ़ यू कैन, अदरवाइज यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स. मोर इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान अभी भी हम फिर रिपीट कर रहे हैं, बट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द पीक, so it's not over by any mile. So please take care of yourself and stay safe. Stay safe, everyone. Take care. Okay, thank you, Naima. Thank you, Hammad. Okay, Bye. bye bye.